Hi guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan. Today I'm going to cover a very simple topic which is called as CLOZE test. But if you look at in CET or in CMAT, CLOZE test has always been the most important topic as far as verbal is concerned. There are a couple of things that we do not do very well as far as CLOZE test is concerned. Now, इसका जो weightage है वो है 5 marks minimum और maximum 10 marks. So sometimes ये CET या फिर CMAT में 5 to 10 marks के बीच में आता है. These are easy questions, these are trick questions. But over a period of time, इसका जो level of difficulty है, that has been now increasing. वो थोड़ा सा बढ़ रहा है. The problem is that the attempting strategy is somehow actually a little bit problematic. So we don't know how exactly this needs to be attempted. So I'm quickly going to tell you a couple of strategy as far as the attempting of CLOZE test is concerned. सबसे पहली चीज, rather I would say सबसे पहली mistake जो हम करते हैं CLOZE test में. So basically what is CLOZE test? Let's have a look at a CLOZE test by the way. So here is a question. This entire question is a CLOZE test. यहाँ पे you've been given a paragraph. So here we have around about 10 questions. कभी ये 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं. I'm only gonna cover first 4 questions to keep the video a little bit short. Now this is what you have as a CLOZE test. Now first of all, what we do is we try to fill in the blank. So what I'm gonna do is, what students do, they'll read this. So they'll read line number 1. They'll see, acha, fill in the blank 1 is there. Then what they'll do, they'll check option number 1. Acha, so option number 1 में इतने हैं. So read line number 1 and then we try to do fill in the blank. That's where we go wrong. Now, ये जो CLOZE test है, इसका level थोड़ा high level है. This is my challenger level in C2C Mentors. And trust me, if you attempt it, you can pause the video, you can check it out. If you attempt it, your accuracy will be 50%. Now, 50% accuracy is actually a good accuracy in this paragraph because इसका level of difficulty थोड़ा ज़्यादा high है. And you can definitely expect these kind of questions in CET. 5 से 10 mark हाथ में होते हैं हमारे, फिर भी we are not able to kind of get them. Now, let's move ahead. The first mistake that we do is that we go question by question. That is something you should not be doing. Now, the best approach for your CLOZE test is read everything from top to bottom. Fine. So if I were to attempt this, I'm going to read from here till here. Okay? That's very important because when you read CLOZE test, it's very important that you understand कि भाई इसमें बोला क्या गया है, and that's where there is this concept that comes into picture. That's called as identifying the main idea. Now you might say कि यार main idea अभी थोड़ा high level हो गया. No, main idea एक बहुत simple सा topic होता है कि paragraph में किसके बारे में बात हुई है. Right? That's number 1. Number 2, you need to understand the result. कि end में हुआ क्या, right? And then you need to understand कि आपका जो CLOZE test है, क्या वो singular है या वो comparison है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में. In our eClasses, we have kind of explained this even in a detailed manner. Now I'll give you the gist of the entire paragraph. This paragraph is basically about Quit India movement. Okay, and what happens here, you can see the importance of Quit India movement have been discussed. So Quit India movement चालू हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, and then in the end actually हुआ ये कि Britishers had to leave the country. एंड जो पावर था ब्रिटिशर्स के पास वो उन्होंने इंडियंस को दे दिया. सो बेसिकली ये यहाँ पे पूरा एक सिनेरियो है. सो यू कैन रीड थ्रू दिस. नाउ लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स बट द एकिंग हार्ट्स ऑफ मिलियंस. अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो एक चीज हम नहीं करते हैं विच इज कॉल्ड एज टोन. यू नीड टू अंडरस्टैंड द टोन. इसकी लैंग्वेज कैसी बिल्ड करी गई है, राइट? ऑथर ने क्या वर्ड्स यूज करे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट द एकिंग हार्ट्स ऑफ मिलियंस, एकिंग हार्ट्स ऑफ मिलियंस जब मैं बात करता हूं, आई एम वेरी मच श्योर दिस इज गोइंग ऑन एन इमोशनल लेवल. दैट्स नंबर 1. लेट्स मूव अहेड. इन दिस ओपन रेबेलियन द इंडियन डैश रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स. नाउ यू हैव बीन गिवन दीज ऑप्शंस. यहां से चूज करना है. द मोमेंट यू डू दिस उल्टा, आप जब पूरा इसको रीड करते हो, देन यू लुक एट द ऑप्शन, श्योरिटी है कि यू विल बी मार्किंग रेवोल्यूशन. Because we know Quit India movement was a good revolution, right? And that is the reason we're going to mark it. But that's not the case here. If you read the whole paragraph start to end, you will understand that okay, this passage is actually written very much emotionally. The author is trying to show his emotions. He's trying to tell the importance of Quit India movement, and that is the reason the first rule that you need to apply is elimination. तो अगर elimination करेंगे तो सबसे पहली चीज ये है liberation out, leadership out, freedom out. Now the close tie is between revolution and patriotism. I want you guys to read the entire paragraph, then only you will be able to understand. But for the fact, एक clue है यहाँ पे. Line number 1 which says the aching hearts of millions. For the fact it is on the emotional level,
emotional level has feelings in it, and that is the reason the answer will be patriotism. Most of you will get it wrong because the revolution is something that we see, because वही हमारे दिमाग में all the time होता है. So patriotism is the answer. Let's move ahead. The British were not only dashed by it, but also were obliged to quit unilaterally. But obliged to quit unilaterally. This is very important. अब यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली बच्चे लोग क्या मार्क करेंगे, एक तो थ्रेटन्ड होगा या फिर अटैक्ड होगा. अब सिंपल सी बात है, एक रूल मैंने बोला था किसके बारे में ये बात हो रही है. तो जब भी आपका क्लोज टेस्ट दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो या फिर दो सिटी, दो कंट्री, दो पार्टीज, किसी के बीच में अगर कंपैरिजन हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसके फेवर में ये बात हो रही है. यहाँ पे जो ये बात है, जो सेंटेंस बात करता है, वो ब्रिटिशर्स के बारे में है, पर वो उनके अगेंस्ट है और इंडियंस के फेवर में है. बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दे वर ऑब्लाइज्ड टू क्विट, राइट. तो जहां पे क्विट का यहाँ पे मेंशन हुआ, इट मींस ब्रिटिशर्स वर ऑब्लाइज्ड टू क्विट, दे डिसाइडेड टू क्विट. इट मींस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, मतलब इंडियंस के फेवर में है. एंड बिकॉज ऑफ विच अगर आप देखोगे, लुक एट द पॉजिटिव, राइट, इट इज नेगेटिव फॉर व्हाट, ब्रिटिशर्स. सो इंस्पायर्ड एंड इंप्रेस्ड, ऑल दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स. तो ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, राइट. ये तो होगा ही नहीं कि ब्रिटिशर्स वर नॉट ओनली इंप्रेस्ड और इंस्पायर्ड बाय इट, बट ऑल्सो दे वर ऑब्लाइज्ड. सो नेगेटिव सेंटेंस है ब्रिटिश के लिए, तो पॉजिटिव तो नहीं बनेगा. एंड अगेन लॉजिकल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी करोगे तो भी ये दो चीजें नहीं बैठ सकती. लेट्स टॉक अबाउट थ्रेटन्ड एंड अटैक. अब इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा. सी, जब मैं बात करता हूँ क्विट इंडिया मूवमेंट केम फ्रॉम द aching hearts, it's an emotional thing. It talks about the patriotism. If you read through the entire passage, you will get to know कहीं पे भी violence नहीं हुआ था. Nowhere Britishers were harmed, right? And they were not only they were also not attacked. And that is the reason when you read the entire paragraph, you will be able to know कि हाँ यार, threatened और attack ये जो है, ये थोड़े एक्सट्रीम है, जो मेरे पैसेज के मेन आइडिया और टोन में नहीं बैठते. तो एलिमिनेशन कर दिया आपने, राइट. तो वैसे भी आपके चार ऑप्शंस निकल गए. अब बचा एक, इनफीबल्ड. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो यू नो इनफीबल्ड का मतलब, या फिर यू डोंट नो इनफीबल्ड का मतलब. इवन इफ यू डोंट नो, by using the option elimination, by understanding the crux of the passage, tone, main idea, couple of these rules if you can apply, you will still be able to get the correct answer. And most of the people will get it wrong. अब infeebled का मतलब क्या होता है? See, एक होता है, infeebled का मतलब होता है weak, कमजोर, और दूसरा होता है to weaken, मतलब किसी को कमजोर करना, but strategically, right? This is very important. This word is very much important. Strategically, you enfeeble someone without harming that person, without attacking that person, without threatening that person. So strategically, you enfeeble that person. Same happened with Quit India movement. Quit India movement was not a violent movement, right? It was a strategic move by the Indians to enfeeble Britishers. In a very simple way, I'll give you an example. Because of this ceasefire violation from the neighbor country, what India did, India didn't actually, revert. India didn't, go ahead and fight with them, or we didn't actually, got into the war with all these people. We played very much strategically. We said that if you're gonna trouble us with the ceasefire, we're gonna block your water. मतलब पानी बंद कर देंगे. तो जैसे हमने ये इशू रेज करा था, प्रॉब्लम होना चालू हो गया था. तो यहाँ पे क्या होता है, आप किसी को वीक करते हो स्ट्रैटेजिकली, बिना उसको मारे धरे. सिंपल सी बात. Now if you understand this, you can still get the answer correct. But number 1, number 2 will be definitely out. Number 3, the importance of Quit India can be dashed from Lord Lillington's statement. अब यहाँ पे बात आती है gauged और gauged, determined, established, diffused, invigorated, right? Invigorated is basically थोड़ा सा प्रोत्साहित करना, right? थोड़ा सा improvise करना. यहाँ पे आपका सही ऑप्शन आना चाहिए established. Why? Because अगर आप पैसेज रीड करोगे start to end, जो मेरा बेसिक रूल है, एंड में आपको पता चलेगा that Britishers left the country. It means Quit India movement gave you the result. And for the fact this passage talks about the result of Quit India movement, which thing can give you result? Thing which is established. जो established चीज होती है, वहां से आपको रिजल्ट मिलता है. Logical understanding से you can mark C. Most of the guys will be marking determined. Diffuse and gauge negative out. This is little bit on the opposite side out. तो जब दो क्लोज ऑप्शन आते हैं, इस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हो. अगेन ये थोड़ा टफ है पैराग्राफ, बिकॉज ये मेरा चैलेंजिंग लेवल है. दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट कैन इंक्रीज योर लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर CMAT एंड CET. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट अगेन टफ होने के बाद भी यू कैन क्रैक इट, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल क्लोज टेस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन.
The importance of quit India can be established from Lord Lilintho's statement. I am engaged here in meeting by far the most dash rebellion. Okay, dash rebellion. अब ये बंदा खुद के बारे में बात करता है. लॉर्ड लिलिंथो करके उनका लीडर है जो खुद के बारे में बात करता है. अब कोई बंदा खुद के बारे में बात करता है एंड ही इज लाइक आई एम डैश रेबेलियन. मतलब यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए सर आपका एडजेक्टिव, राइट? यहां पे आएगा आपका एडजेक्टिव. नाउ एडजेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई खुद की प्रेज कर रहा है तो एडजेक्टिव आना बहुत जरूरी है. तो ऑस्पिशियस तो नहीं हो सकता, ऑस्पिशियस रेबेलियन तो कभी नहीं हो सकता, राइट? दिस इज आउट. प्रेजवर्दी रेबेलियन भी कभी नहीं हो सकता, दिस इज आउट. Trivial, no. Serious, no. Right? How can a rebellion be serious? It is absolutely normal कि भाई rebellion मतलब serious ही होता है. Rebellion serious, I mean that's common sense, right? तो ये चारों के चारों auspicious, praiseworthy, trivial ये exactly opposite है, right? Serious logically नहीं बैठता. Answer is magnificent. Magnificent is an adjective, so I am only trying to capture adjective from this. Getting my point? And that is the reason your answer will be magnificent. So you can understand, you can still crack 4 on 4 questions just by understanding couple of rules. कि यार मेन आइडिया समझो, टोन समझो, स्टार्ट टू एंड इसको पढ़ो, क्रक्स समझो. अब मेन आइडिया और टोन जो हमने बात करी, राइट, ये तभी यूज होता है जब आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है. बट अगेन दिस इज समथिंग क्या पीपल गोना लीव. ये 5 मार्क जो है या 5 से 10 मार्क जो है बहुत सारे लोग छोड़ेंगे. बट इफ यू प्रैक्टिस ऑन दैट लेवल यू कैन डेफिनेटली मार्क दिस अप एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल. सो गाइज, this is what you will be learning with C2C mentors. This is what I will be covering in my workshop. My workshops are going to be on basic, advanced and challenger level. This is something we have actually incorporated in our eClasses and classroom sessions. You can have online sessions also. Classroom sessions are in actually Pune and Mumbai. So if you guys want to join in, you can definitely join in. But again, it's a good passage to kind of kickstart with your entire preparation for CET. So pause the video, go through the passage, try to do it by yourself. I will be making more videos of this sort by taking one topic every day. I'll try my level best, right? So if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe. That's it from my side, guys. Thank you so much.